Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying good health. With this wish, I start off. As I have told you earlier that I have started a series of online lectures for my BA students. So with this, I have selected some important and difficult words of the relevant chapter to give you the explanation and meanings of these words. Today I have selected the rest of the words to explain the meanings. So we start off from the first word. We have hierarchy. That means darja bandi, a graded ranked series in a system. किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी सिस्टम के अंदर जब लोगों को उनके रैंक्स और ग्रेड्स के अकॉर्डिंग वन बाय वन फ्रॉम लोअर टू हायर और हायर टू लोअर ग्रेडिंग की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड हायरार्की. I'm telling you again that I haven't made the sentences. This is up to you. Clarify your meanings and then make sentences. Now we have strain. That means kashmakash, khijao, nervous, tension, worried. Or you should use it when there is conflict in relations, when there are difficult or tiresome relations, or when there are not strong boundaries between people or countries. So you can say there are strained relationship between two persons or the husband and the wife. Make variable sentences so you can get hold of English language, or you can do creativity. So now we have upheavals. Upheavals. That means Urdu meaning इनकलाब अजीम या ओवरटर्न चेंज जिसे कहते हैं. वायलेंट और सडन चेंजेस, अ बिग चेंज. और व्हेन यू विल यूज इट व्हेन अ पर्सन, सिस्टम और एनी कंट्री सफर अ ग्रेट चेंज. जब आपकी अपनी लाइफ के अंदर, जब किसी कंट्री के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा चेंज आ जाए, जैसे नाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस. सो देर आर ग्रेट अपहीवल्स इन USA, in Italy and other countries also. Then we have disruption. Disruption, that means disorder, obstacle और disturb होना. कोई बिगाड़ आ जाना, रुकावट पैदा होना, किसी काम में बदनज़मी क्रिएट करना, खलल वाक़या होना किसी चीज़ का. When a thing or system is disturbed by force or indiscipline is created. Obviously जब कोई फोर्स का इस्तेमाल करके कोई चीज़ चल रही है, एक सिस्टमैटिक वे में चीज़ें जा रही हैं, एंड यू यूज़ योर फोर्स टू डिसरप्ट द थिंग्स, टू डिस्ट्रॉय द थिंग्स. देन वी हैव menacing. Menacing, that means threatening और dangerous. जब किसी चीज़ से आपको नॉइजिया फील हो, ख़तरा महसूस हो, डर महसूस हो, खौफ महसूस हो, तो दैट इज़ menacing. और इसके लिए जो इसका वर्ब होगा menace. menace या menacing नहीं पढ़ना. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज menacing और menace. थ्रेट और डेंजर, जब कोई पर्सन, कोई कंट्री, कोई आइडियोलॉजी, कोई वायरस, कोई चीज़ एक ग्रेट menace बन जाए किसी भी सोसाइटी के अंदर. देन वी हैव sanctity. इसकी अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में sanctity भी है, बट वी आर यूज्ड टू फॉलो ब्रिटिश एक्सेंट और ब्रिटिश वोकैबुलरी. सो sanctity, तकद्दस, sacred, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्थ प्रोटेक्टिंग. कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो, कोई प्लेस, जैसे खाना काबा इज़ अ प्लेस ऑफ sanctity फॉर ऑल ऑफ द मुस्लिम्स. इसी तरह दूसरे रिलीजन्स की कोई जगह जो है, दैट कैन बी अ प्लेस ऑफ sanctity. कोई पर्सन जो है, अगर वो बहुत पायस है, तो दैट यू कैन से ही इज़ लीडिंग अ लाइफ ऑफ sanctity. देन वी हैव अग्रेशन. अग्रेशन, दैट मीन्स जारहियत, फीलिंग्स ऑफ एंगर और हेट्रेड. अगर आपको किसी से बहुत नफ़रत महसूस हो रही है, आपका सडन टेम्परामेंटल हो रहे हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, जारहियत दिखा रहे हैं, जिससे हो सकता है लड़ाई पैदा हो जाए. जैसे कोई इन पर्सन जो है बहुत अग्रेसिव हो सकता है, जैसे हिंदूज आर वेरी एग्रेसिव इन देयर
temperament in their behavior toward Muslims of India or Muslims of Kashmir. And then we have contiguity. Contiguity. Contiguity, it's wrong. Contiguity. That means harmony, harmonized होना, किसी के साथ जोड़ या रब्त पैदा होना, हम आहंगी क्रिएट करना, किसी के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेशन होना, एसोसिएशन होना, जब कोई चीज़ या कोई पर्सन जो है किसी के साथ जुड़ा हुआ हो इन द सेंस ऑफ हार्मनी, और वैसे भी कोई चीज़ दूसरी जगह पे मौजूद हो, जैसे ट्रांजिस्टर्स वगैरह, इफ़ दे आर joining line to line with one another or touching to each other. So then we have from scratch. Scratch, like it's obvious from the meaning, that is very easy phrase or idiom कि आप बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट ले रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपके पास कुछ भी नहीं है. यू हैव नथिंग, यू हैव नो रिसोर्सेज, यू हैव नो रोड मैप, यू हैव नथिंग. आपको सारी चीज़ें जो हैं स्क्रैच आउट करनी है, सारी चीज़ें खुद तलाश भी करनी है, बनानी भी हैं, बेसिस भी खुद कंस्ट्रक्ट करनी है, और उनके ऊपर जो रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग है और जो रेस्ट ऑफ द आपकी मेकिंग होनी है वो सारा कुछ जो है करना पड़ेगा. लाइक with reference to this essay कि Pakistan have to start everything from scratch. Then we have floundered. That means collapsed, not performed well. किसी चीज़ का जो है वो ख़राब हो जाना, फिसल जाना, गिर जाना, या फिर जो है बिखर जाना. मीन के स्ट्रगल्ड और परफॉर्म टू टास्क वेरी बैडली. जब आपको कुछ पता ही ना हो, आप एकदम से लड़खड़ा जाएं कि आई डोंट नो व्हाट टू से और व्हाट टू डू टू कंटिन्यू विद माय वर्क. एकदम से बीच में लड़खड़ा जाना या फिर कोई बहुत बड़ा झटका लग जाना. देन वी हैव अनदर इडियम इन जेपर्डी. इसका जो एग्जैक्टली फ्रॉम द विकैबुलरी, फ्रॉम द स्पेलिंग्स, ऐसा लगता है कि दिस शुड बी प्रोनाउंस्ड एज जियोपार्डी, बट दिस इज इनकरेक्ट और रॉन्ग, एंड दिस सीम्स वेरी लाइक फ्लॉ कि ये क्या हो रहा है. The correct one is in jeopardy. In jeopardy मतलब कि कोई चीज़ जो है ख़तरे में हो. The state of severe danger or harm. Like आप कह सकते हैं now coronavirus has put many lives in jeopardy. Next we have a very interesting word that is used commonly, chauvinism. Chauvinism. That means when you have prejudiced love or liking, जब आपकी अनड्यू किस्म की लव है, लाइकिंग है फॉर एनी रिलीजन, फॉर एनी कंट्री, फॉर योर ओन सेल्फ, कोई डॉगमा है, कोई क्रीड है, कोई बिलीफ है, जिसके साथ आप कह लेते हैं कि दिस वन इज करेक्ट एंड अदर वंस आर रॉन्ग. जैसे कि कोई पर्सन जो है उसके शोविनिस्ट आइडियाज हो सकते हैं कि मेरा कंट्री जो है वो ठीक है, वो जो डिसाइड करता है दैट इज़ करेक्ट, और दुनिया के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं. इसी तरह जो नेशनल, कल्चरल और जो है मेल शोविनिज्म का वर्ड आप सुनते होंगे. मेल शोविनिज्म मीन कि मर्द ही ठीक है, औरत जो है वो गलत है. देन वी हैव ऑग्यूरी. ऑग्यूरी नहीं कहना, ऑग्यूरी. दैट मीन्स ओमन, कोई शगुन, किसी चीज़ को समझ लेना, प्रिडिक्ट करना, फॉल निकलवाना, या कोई फ्यूचर में देखना कि समथिंग इज़ गोइंग टू गुड. किसी चीज़ को, किसी साइन को, किसी प्रॉमिस को, अहद को, मुआहदे को समझना कि दैट इज़ गोइंग टू बी अप्रूव गुड इन द फेवर ऑफ योर कंट्री और इन योर सेल्फ. ओके, दैट वाज ऑल द वर्ड्स, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स. So inshallah from tomorrow I shall upload the lecture on second essay, The Eclipse by Virginia Woolf. And if you want to get benefit from this channel permanently, you can subscribe, like and share with the students. That must be beneficial for you. I just aim at this. Stay healthy and stay good, stay positive. See you tomorrow inshallah. Goodbye.